understanding the nature and demand of the mains examination, we will learn about that what to read and how to read for mains examination and what should be the focus areas that your preparation becomes squarely result oriented and balanced argument बनाने के लिए हम देख रहे हैं you have to look that the specific topic जो है in its larger context. हमारे पास larger picture आ जाती है, we are able to get the context of the questions which are asked in the mains exam right and which हेल्प अस टू राइट रेलेवेंट आंसर्स. टॉपिक है सिलेबस का, उसकी कॉजल लिंकेजेस हैं दूसरे टॉपिक्स ऑफ सिलेबस के साथ. सारा का सारा सिलेबस है इट्स लिंक्ड ऑर्गेनिकली, वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी में बना हुआ है. तो टिवली इट इज स्टडी ऑफ इंडिया ओनली, GS1 to GS4. दिस थ्रू डूइंग दिस योर प्रेपरेशन बिकम्स वेरी एक्टिव. आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यू आर फिल्टरिंग इट थ्रू द लेंस ऑफ your syllabus and the macro picture of India that you are building. When you have a structured information, that will enable you to write structured answers as well. हेलो. यूपीएससी एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लंडर करते हैं when they prioritize their prelims oriented preparation over mains preparation. So what they end up doing is turning their preparation upside down. This they devote maximum time to prelims preparation and devote only around 3 months to mains preparation between the gap of prelims and mains between the 3 months gap of prelims and mains exam. So the result is that they fail miserably at the mains examination because the scope of main examination is so vast that it cannot be covered in like very less time of 3 months. So इसमें हम what will try to emphasize is that it should be done the other way around. The major time of your preparation should be given to the mains preparation, the mains oriented preparation, and only 2 odd months are sufficient for preliminary exam preparation. Because preliminary exams syllabus can easily be subsumed under the mains syllabus. So in this section, we'll look into the nature and demand of the mains IAS mains exam. So by understanding the nature and demand of the mains examination, we will learn about that what to read and how to read for mains examination and what should be the focus areas in the mains examination. So that your preparation becomes squarely result oriented and you do not get the feeling of pushing against the wall while preparing for UPSC. Most important guides assess that what should be requirements of the exam are UPSC syllabus, and the other most important guide is previous year question paper of the mains examination, because the topics in UPSC syllabus are morely are of an open-ended nature, and the previous year questions help you sort of narrow down on that open-ended nature of the syllabus. So before going into the contents of the syllabus, in this video, we won't be looking at the contents of the syllabus per se. We will not be looking at the topics of the syllabus, but what is the requirement of the main examination. So right before the contents of the syllabus, in the syllabus section, there has been written the requirement of the exam. So we will take a look at it. So it states here that UPSC intends to assess intellectual traits and depth of understanding of the candidates rather than merely the range of information and their memory. And it also states that nature of questions would be such
So how they are going to assess your depth of understanding and intellectual traits through the nature of questions which will ask you to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demands. तो जब क्वेश्चन कन्फ्लिक्टिंग सोशो इकोनॉमिक डिमांड्स पर आ ही चुका है, सो उसमें व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस इज टू टेक अ बैलेंस जजमेंट। इसमें हम बाइनरीज ऑफ राइट एंड रॉन्ग और गुड और बैड का सहारा नहीं ले सकते। तो वी विल लुक एग्जामिन दिस एस्पेक्ट थ्रू एन एग्जांपल। तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट के बेनिफिट्स तो आई गेस सभी को पता ही है, तो इट्स हार्डली नीड्स स्टेटिंग हियर। बट जो डेवलपमेंट की डाउन साइड्स हैं, जो उसकी नेगेटिव आउटकम्स हैं, लेट्स ब्रिंग आउट दोस। तो जो डेवलपमेंट है, जो प्राइवेट कैपिटल है, वो इट प्रेफर्स द ऑलरेडी डेवलप्ड रीजन्स ओनली, कि जहां पे पहले डेवलपमेंट हो रखी है वहां पे जाना प्रेफर करती है, राइट। सो व्हाट इट डज इज कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज ऑलरेडी हैं, फॉर एग्जांपल लाइक कंपेयर महाराष्ट्र विद झारखंड में भी, तो कैपिटल वुड लव टू गो टू महाराष्ट्र नॉट झारखंड। तो इट इंक्रीजेस द रीजनल डिस्पैरिटीज। तो डेवलपमेंट से जैसे डिस्प्लेसमेंट भी होती है, डिस्पोजेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया की जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, वहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन ओर, काफी उनको डिस्प्लेस किया जाता है, एंड जिससे दे लूज लूज आउट ऑन देयर लाइवलीहुड्स, एंड these regions for this very same reason are also infested with left wing extremism, and development also लीड्स टू राइजिंग रूरल अर्बन, जो डिवाइड है उसको भी बढ़ाता है ये। एंड डेवलपमेंट आल्सो लीड्स टू increased inequalities, rising inequalities, because vast majority of people are still still benefit from market led development, because ज्यादातर हमारी jobless growth हुई है, like if you I guess you must be knowing it। एंड डेवलपमेंट पे और चीजें भी आ रही हैं, कास्ट वायलेंस जो है वो भी बढ़ रहा है, लाइक सिंस इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसका क्या कारण क्या बन जाता है कि जो जो लोअर कास्ट हैं हु आर एक्सपीरियंसिंग मोबिलिटीज, और जो डायनेमिक है उससे चेंज हो जाती है, जो स्टेटस को है और डायनेमिक्स का चेंज हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट लीड्स टू क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज एज वेल। सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइंस कम्युनल वायलेंस भी कारण, जो डेवलपमेंट है वो कॉमन वायलेंस का भी कारण बन जाता है। मणिपुर का एग्जाम्पल भी है कि एक कम्युनिटी को लगता है वो ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, दूसरी कम्युनिटी अगर पीछे रह जाती है तो दे क्लैशेस आ जाते हैं। तो इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है, ड्यू टू दिस लुकिंग एट द डार्क साइड ऑफ डेवलपमेंट, कि जो मार्केट लेड डेवलपमेंट है वो इनहेरेंटली सिलेक्टिव है, एंड इट ऑलरेडी एक्सेंचुएट्स द एसिमेट्रीज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे हम मार्केट को ही रेंज नहीं दे सकते, तो यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है इट बिकम्स नेसेसरी फॉर कि जो डेवलपमेंट है इंक्लूसिव वे में जाए। जो अभी डेवलपमेंट हो रही है इट्स नॉट इन इंक्लूसिव वे, जो मार्केट लेड डेवलपमेंट है। तो इस एनालिसिस से हमने एक कंसिडर्ड व्यू लिया है, एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट बनाई है। तो बैलेंस्ड आर्गुमेंट बनाने के लिए हम देख रहे हैं, यू हैव टू लुक दैट द स्पेसिफिक टॉपिक जो है इन इट्स लार्जर कॉन्टेक्स्ट। वो होलिस्टिक वे में देखना पड़ता है, आपको लार्जर पिक्चर बनानी पड़ती है, इसको अपने सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डालना पड़ता है, सारे जो कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट हाउ टू डेवलप द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड intellectual traits is it can be done through building a larger picture, the holistic picture, and bringing out all the context surrounding a topic. This will be your intellectual exercise to build that larger picture। ये आपका खुद का निजी मामला बन जाएगा, it won't be presented to you in a spoon fed or like ready material।
So how it is done, how to go about building the larger picture. So it is done through the intellectual exercise of 5 Ws and 1 H. What these 5 Ws and 1 H constitute? These are what, when, who, where, why and how. तो हम अभी इस चीज के ऊपर देखेंगे. तो लाइक लेट मी थोड़ा इसको भी मतलब डिफाइन कर देता हूँ आपको. जो 5H 5W एंड 1H अप्रोच है, उसमें जो व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हु है, वो एक जो टॉपिक है, कोई भी फिनोमेना है, ठीक है, इट वुड एक्सप्लोर, उसको खोल देगा कि अच्छा एक टॉपिक में चीजें क्या हैं. एंड द जो चीज द क्वेश्चन ऑफ जो व्हाई है, व्हेन यू विल आस्क व्हाई that's this topic comes into being, that will lead you to interlinkages with other topics, causal linkages with other social, political, economic, historical contexts, which will lead to building of larger picture. What, when, where, who से टॉपिक की बाउंड्री सेट होंगी, why से वो टॉपिक जो है बाकी लार्जर कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, एंड हाउ इज लाइक जो हाउ बताएगा दैट हाउ इट इज इंटरेक्टिंग दैट वाइडर नेटवर्क. So we will also understand through the medium of example. तो हम अभी डेमोक्रेसी की एग्जांपल लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू बिल्ड अ लार्जर पिक्चर अराउंड इट यूजिंग द 5W एंड 1H अप्रोच. तो अगर हम डेमोक्रेसी को बीच में रख लें एंड उसके व्हाट, वेयर, एंड व्हेन एक्सप्लोर करें, तो वो जो डेमोक्रेसी एज अ टॉपिक है, उसके बारे में मतलब आ जाएंगी सारी. फॉर एग्जांपल जो हमारी डेमोक्रेसी है, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, our democracy includes the federal principle, and our democracy includes the principle of separation of powers. These are just examples, okay? But we can also collaborate why पूछ सकते हैं इसमें, and this will lead us to linking the concept of democracy with other parts of the syllabus. हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ लिंक करने लग जाएगी. For example, why we went for parliamentary democracy? Why only this form of government we went for? उसका हम देखेंगे कि the history in our colonial legacy है उसमें, because British गवर्नमेंट इज itself organized around parliamentary democracy. और हमारा जो इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स है, जो इंटेलिजेंसिया ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट था, so they were trained in British traditions. And the federal principle, why we went for federal principle, this is also rooted in our history, pre-independence history, because and even before the British came, अलग अलग सूबास थे, फेडरेशन थी already under the Mughal rule as well. There are linguistic regions which constitutes their own distinct cultures, और वो थोड़ा demographic features के साथ भी मिलता है. And all other things of like size of India and फेडरल प्रिंसिपल, उसकी जो है नींव कहाँ पे आती है. तो बाय क्वेश्चनिंग व्हाई वी कैन एक्सप्लोर दोज एस्पेक्ट्स एज वेल. सेपरेशन पावर्स में वाई क्यों है? बिकॉज लाइक द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन द गवर्नमेंट, because as the dictum goes, the power corrupts, absolute power corrupts absolutely. So the history of humanity has taught us that there should be separation of power so that there can be effective checks and balances in the exercise of governmental power. Okay. तो ये तो हो गया कि 1947 का या 1950 का हमारा सिनारियो कि वी वेंट फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. तो हम और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दैट हाउ द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन इन इंडिया. ऑपरेशनलाइजेशन कैसी होएगी? फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट वेरियस अमेंडमेंट्स, दैट व्हाई क्या कारण रहा कि इतने अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आए, एंड द इंडियन पॉलिटिकल पैटर्न कैसा उभर रहा है कि जब एब्सोल्यूट मेजोरिटीज आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज रूल और राजीव गांधीज रूल और प्रेजेंट डे गवर्नमेंट अंदर नरेंद्र मोदी के जब एब्सोल्यूट मेजोरिटीज आ जाती हैं, तो देयर बिकम्स अ पैटर्न ऑफ अंडरमाइनिंग द सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वीकन करने लग जाते हैं. फेडरल प्रिंसिपल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिडिक्यूल किया जा रहा है 80s 70s 80s में. जैसे दे यूज्ड टू बी डिसमिसल ऑफ
स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन flimsy grounds, आज की डेट में वो डिसमिसल तो नहीं हो रहा, बट गवर्नर की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी है, एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फाइंडिंग वेरी इनोवेटिव वेज टू meddle into the affairs of state governments. So also there is because of absolute majorities, there is a tendency towards centralization of power and concentration of power. So this leads to commentators to conclude that India is not parliamentary democracy. It might be a parliamentary democracy de jure, बट डी फैक्टो इट्स इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इलेक्शंस होती हैं, यहाँ 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, बट देर आर नॉट जो इंस्टीट्यूशंस गवर्निंग इंडियन पॉलिटी है, दोज आर नॉट दैट स्ट्रांग. तो अगर इलेक्शन इतनी सेंट्रल हो जाते हैं, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो और भी सेंट्रल हो जाता है, तो इट्स इंडिपेंडेंस जो है बहुत ज्यादा मायने रखने लग जाती है. दैट्स व्हाई इट हैज बीन regarded accorded the constitutional status, and you have to learn about अच्छा कि उसकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, so that it remains an independent institution, उसकी पावर्स क्या हैं, और all those things. तो अभी थ्रू दिस अप्रोच ऑफ 5W एंड 1H हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट खोल लिया है, एंड ये तो भी एग्जांपल है, आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसका कॉन्टेक्स्ट और भी खोल सकते हैं. तो इसमें सारे और जो हमने सारे जो अभी फेसेट्स निकल के आए हैं, दोज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ओनली सिलेबस का पार्ट है. फॉर आल्सो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे इफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी supposedly it's not working exactly as the founding fathers intended it to be, तो हमारे पास सिलेबस में कंपैरिजन विद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स भी है. या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के साथ कंपैरिजन कर लो, फ्रांस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ कर लो, आप यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ कर लो, सो दैट आपके पास हमेशा ऑल्टरनेटिव रहें, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स रहें, बिकॉज दीज द रियलिटी इज स्टिल इवॉल्विंग. सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमेशा अप टू डिबेट एंड अप टू क्वेश्चन होते हैं. तो जो हमने इस वीडियो में दो एग्जाम्पल्स डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी की डिस्कस की है, जो जब हम उसकी लार्जर पिक्चर बना रहे थे, तो जो स्ट्रैंड्स निकल के आए हैं, तो दोज आर पार्ट ऑफ द सिलेबस ओनली. तो व्हाट वी सी हियर इज कि हर जो टॉपिक है सिलेबस का, उसकी कॉजल लिंकेजेस हैं दूसरे टॉपिक्स ऑफ सिलेबस के साथ. तो व्हाट इट लीड्स अस टू कंक्लूजन इज कि जो सारा का सारा सिलेबस है, इट्स लिंक्ड ऑर्गेनिकली, वो एक ऑर्गेनिक यूनिटी में बना हुआ है. तो जो डिस्टिंक्शन बिटवीन GS1, GS2, GS3 और GS4 है, दैट इज एन आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन. यू ट्रीट इट एज वन होल सिलेबस. तो जब आप ये चीज समझ लेंगे, आपका जो पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग एग्जाम, एंड जो पर्सपेक्टिव बनेगा, द मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ जो इंडिया बनेगा, बिकॉज इफेक्टिवली इट इज स्टडी ऑफ इंडिया ओनली, GS1 टू GS4. तो वो काफी आपका आपस में बहुत बड़ा लाइक एक एसेट बन जाएगा, जो आपका एक मैक्रो पिक्चर ये बनेगी. ठीक है. तो जो ये मैक्रो पिक्चर बन उभर के आ रही है, यू हैव टू ऑलवेज कीप इट अलाइन विद द सिलेबस, कि आप हमेशा सिलेबस को साथ में टैली करते रहें, कि जो मैक्रो पिक्चर आप बन रही है, आप सिलेबस के दायरे में रह के ही बना रहे हैं उसको. तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, very much aligned with the UPSC syllabus. Or while doing this, through doing this, your preparation becomes very active. आप कोई भी जो information आ रही है, you are filtering it through the lens of your syllabus and the macro picture of India that you are building. If that information that you're receiving doesn't fit into these both parameters, so you should reject that information. और जो information बहुत bombard काफी हो रही होती है, लाइक बहुत सारी आ रही होती है, जब आप उसको नाइसली फिट कर देंगे सिलेबस और मैक्रो पिक्चर में, इट बिकम्स वेरी वेरी मैनेजेबल. आपके पास स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है, एंड इट एड्स इन रिटेंशन एज वेल. कमिंग अप दिस सेक्शन, हमने देखा जो डिमांड ऑफ द मेन एग्जामिनेशन है, दैट इज डेवलपिंग डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स. जो ये दो चीजें हैं हम बनाते हैं by building a larger picture around each topic and the whole syllabus through 5W and 1H approach.
तो जब हमारे पास लार्जर पिक्चर आ जाती है, वी आर एबल टू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द मेंस एग्जाम, राइट, एंड व्हिच हेल्प अस टू राइट रेलेवेंट आंसर्स। और जब हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, जब हम लार्जर पिक्चर बनाते हैं, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड information. So when you have a structured information, that will enable you to write structured answers as well, which will lead to uh, you writing meaningful answers. And this whole process, will make your preparation active, in which you won't be overwhelmed by the information that you receive, but you will be actively seeking the information so that you can complete your larger picture, and it will also make your preparation very enjoyable. I hope this was useful to you. Thank you.